أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Adiba Shahwar from GMC Sangarati of 2022 batch. I shall be your anchor today and I welcome you all with warmth and gratitude to this much needed session. Before we begin, I would like to invite Abrar for the recitation of the Holy Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala bless the reciter and allow the words of the Quran to illuminate our hearts. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيम. इस सूरह की आखिरी आयत में सजदे का हुक्म किया गया है। सेशन होने के बाद इंशाल्लाह आप सब लोग सजदा कीजिए। Subhanallah, that was truly beautiful. Ameen. Now, before we proceed further, let me briefly introduce IMSA. IMSA is a non-profit initiative taken by medicos from all over Telangana with an aim to create a unified platform for medical students towards self-improvement and upliftment of society under the divine guidance of Islam. Objectives of IMSA are to integrate Quranic principles into the study and practice of medicine, to create an environment that fosters educational guidance and holistic development for medical students, to equip medical students to make a significant contribution to society. Today's session is very close to our hearts because it's all about peace guiding peace. We are joined by some of our very own brilliant seniors who have recently gone through the same exam stress, the same sleepless nights, and the same doubts. They are here to make your journey a little easier, a little more structured, and a lot more confident. MBBS is a long and often overwhelming journey, especially when it comes to clinical subjects like surgery, ENT, and ophthalmology. These subjects are not only vast but demand conceptual clarity, visual understanding, and smart study strategies. So, today, to make this journey easier for you, we have brought in three amazing doctors, each from your own community, to guide you with tips, resources, common mistakes to avoid, and how to study smart, not just hard. To begin with, Dr. Sabnam Mehraj, who will help break down how to study surgery and ortho for exams, covering everything from the theory, case presentation, important images to how to approach long questions and how to tackle viva with confidence. If surgery seems scary or you are confused to where even to begin, this session is for you. Dr. Shabnam Mehraj. The floor is all yours, Dr. Shabnam Mehraj.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, ये शेयर कहीं हो रहा पोस्ट। इसमें स्क्रीन विजिबल? Yes, जी। ma'am, your screen is visible. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all. I myself Dr. Shabnam Miraj, intern from 2K20 batch from Shadan Institute of Medical Sciences. I would like to thank. I'm very thankful for IMSA for giving me this chance to be part of this wonderful session. Inshallah, today I would like to give a glance about the subject surgery and orthopedics. MBBS curriculum में either we choose to be a physician or consultant or a surgeon. So surgery is such a core clinical subject of an entire MBBS. Um, Surgery and orthopedics, like every household has might be going through a surgery, और हर घर में ऑर्थोपेडिक का तो कोई प्रॉब्लम होता है। हम खुद अभी से अभी कमर दर्द, घुटनों में दर्द या घर में किसी बड़े बुजुर्ग को भी होता है। तो ये जब भी ये जो भी सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं, इसकी बस ये फीलिंग नहीं रखनी चाहिए कि हमें बस पास एग्जाम को पास करना है। इसे ये नियत से सीखो कि हमें आगे चल के अच्छे डॉक्टर बनना है, ताकि घर वालों को अगर कोई किसी की सर्जरी होने वाली है तो हम उनको प्रॉपरली गाइड कर सकें कि एक्चुअली प्रॉब्लम हुई क्यों है, इसके लिए सर्जरी कितनी जरूरी है, इमरजेंसी सर्जरी करना है या इलेक्टिव सर्जरी करना है, उस सर्जरी से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, नहीं करने पर क्या होंगे। वैसे सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स में भी लाइक ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, उसका प्रोफाइलैक्टिक क्या है, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर आ गया तो उसे कैसे ट्रीट करते हैं। तो जब भी आप पढ़ते तो उस नियत से पढ़ते तो ज्यादा क्या कॉन्सेप्चुअल भी आपका बेटर रहता और रिटेंशन भी ज्यादा होता। और जब भी आप लाइक आपके डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते तो ज्यादा लाइक सबकॉन्शियसली वो फीड होते रहता, तो आपको जब याद करते हो उतनी मुश्किल होती नहीं। Coming to surgery, surgery may overall we have like general surgery and systemic surgery part. The general surgery is covering overall like trauma, ATLS management, all about the shock, hypovolemic shock or hemorrhagic shock, the burns, then your lymphatic diseases, vascular, arterial and venous, skin and subcutaneous infections, the endocrine organs, all the general kind of thing. Whereas the systemic surgery is all about like mostly it consists about GI surgery apart from cardiothoracic and neurosurgery. सर्जरी एज सच तो बहुत इजी सब्जेक्ट है आई फील, बिकॉज अब तक लाइक आइदर पैथो में देन इन इवन इन मेडिसिन माइक्रो थोड़ा बहुत कवर हो गया, लाइक ऐसा कुछ न्यू नहीं है, बस इसमें ज्यादा आपको मैनेजमेंट पार्ट दैट इज इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, और थोड़े से स्कोरिंग क्राइटेरिया से तो लाइक what are the instruments, even practical purpose ज्यादा है, और else it's nothing new to you। इसमें जितने भी डिसीजेस कॉन्सेप्ट है आपके ऑलरेडी ऑलरेडी वही है। देन कमिंग अबाउट ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स भी लाइक इस थोड़ा सा न्यू सब्जेक्ट है, इसके टॉपिक्स थोड़े से इसके न्यू नेम्स लाइक न्यू लाइक बार्टन फ्रैक्चर क्या है, स्मिथ फ्रैक्चर, कोलिस फ्रैक्चर, इट्स समवॉट लाइक लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। आप लोगों को कभी कभी ऐसा दिखता है कि अरे याद नहीं रह रहा कि कौन सा डिसलोकेशन से कौन सा पार्ट का फ्रैक्चर है, और लाइक इट्स टोटली इमेजिनेशन बेस्ड। कमिंग टू सर्जरी लाइक समझ में आता है, लेकिन ऑर्थोपेडिक्स थोड़ा सा ड्राई फील होता, थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि भूल जा रहे, बट विथ टाइम व्हेन यू कीप ऑन रिवाइजिंग इट इट विल गेट इजियर दिस वे। For university exam, both theory and practical consist of 200 marks. आप लोगों को तभी तक तो आइडिया हो चुका होगा कि क्या सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है उसका मार्क्स एंड ऑल। पेपर वन इज जनरल सर्जरी कंसिस्ट ऑफ 100 marks, and paper two is systemic surgery plus orthopedics. Systemic is not only just systemic, it also includes thyroid, pancreas, breast also.
तो यहाँ पर और प्रैक्टिकल जो है 150 मार्क्स फॉर सर्जरी एंड ऑर्थो इज जस्ट फॉर 50 मार्क्स. Here we can see that general surgery is more important than systemic. क्योंकि ऐसा लगता है कि सिस्टेमिक बहुत ज्यादा पढ़ना है, लाइक इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट ऐसा नहीं है. ज्यादा आप लोगों को जनरल सर्जरी पार्ट पे और दूसरे पार्ट पे फोकस करना है, बिकॉज जनरल सर्जरी इट इटसेल्फ कंट्रीब्यूट्स 100 मार्क्स. और ये बहुत ज्यादा इजियर है और लाइक न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, पढ़े हुए है. एंड इससे थोड़े लेसन में से लाइक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि शॉक में लाइक हाइपोवॉल्यूमिक या हेमोरेजिक शॉक का क्वेश्चन आता ही आता है. कमिंग टू बर्न्स, लाइक द बर्न्स का क्लासिफिकेशन हो गया, उसका मैनेजमेंट, वुंड हीलिंग से भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं. फिर स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी लाइक व्हाट इज पैरानोइकिया, गैंग्रीन, अल्सर और डिसऑर्डर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, वास्कुलर डिसऑर्डर्स. इससे लाइक शॉर्ट शॉर्ट लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से कोई ज्यादा लाइक बाउंसर्स आने की उम्मीद ज्यादा नहीं है. तो आप लोग जनरल सर्जरी जब भी पढ़ते हैं तो फोकस मोर ऑन जनरल सर्जरी, बिकॉज इट कैरीज मोर मार्क्स. whereas in paper 2 आप लोग अगर ऑर्थोपेडिक्स पढ़ लिए तो लाइक इट्स अबाउट 1 LAQ, 3 SAQs एंड 4 VSAQ. तो आप आराम से ऑर्थोपेडिक्स में स्कोर कर ले सकते हो. बट क्योंकि एक ही दिन बिटवीन एग्जाम्स यू ओनली गेट प्रोबेबली मोस्टली ओनली 1 day. उस सिंगल डे में टू रिवाइज द कंप्लीट सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक्स इट गेट्स बिट हेक्टिक. तो आप लोगों को ऑर्थो बिल्कुल क्रिस्प रखना है कॉन्सेप्ट, लाइक पक्का ऑर्थो तो छोड़ना तो ऑप्शन ही नहीं. और जो कि सर्जरी का पार्ट है पार्ट पेपर 2 में, उसमें थायराइड मोस्टली लोग क्या है सिर्फ एब्डोमेन जीआईटी पे फोकस करते हैं. ऑब्वियसली इट्स इम्पोर्टेंट, बट इतने ज्यादा क्वेश्चन है उसमें से कोई एक या दो क्वेश्चन आते हैं तो उतने मतलब पढ़ना है. लेकिन ये जो भी बाकी के जो लेसन है थायराइड, पैंट, ब्रेस्ट, एडिनल ग्लैंड, इससे तो लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन थायराइड का कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा या ब्रेस्ट का कोई भी लाइक फाइब्रोइडिनोमा या फिलोज ट्यूमर, जो भी ऐसे जो क्वेश्चन है श्योर शॉर्ट आप लोग आते तो लाइक इजिली शॉर्ट और वेरी शॉर्ट स्कोर कर ले सकते हैं आप. और इसमें तमाम जितने भी लेसन है उस लेसन के एलएक्यूज कौन से भी लेसन है ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ जीआईटी से आता है, बिकॉज वी गॉट एलएक्यू फ्रॉम यूरिनरी सिस्टम, रीनल सेल कार्सिनोमा. So all the lessons are important. Even in orthopedics, mostly either fracture electro आता or else infection, maybe a carcinoma, or else a tuberculosis. इलेक्ट्रो लाइक फिक्स, इसमें से कोई बॉन्सेस ऐसा कुछ आते नहीं. मे बी अगर एक आए तो शायद वेरी शॉर्ट में कुछ डिफरेंट आ सकता. और जो है एनेस्थीसिया, रेडियो डायग्नोसिस, डेंटिस्ट्री ये भी इंक्लूडेड है सर्जरी में. मे बी यू कैन एक्सपेक्ट मोस्टली एन एमसीक्यू और एल्सो वीएसक्यू, लेकिन उतना ज्यादा है नहीं. आप लोग पढ़ ले सकते हैं, एक दो क्वेश्चन रहते क्वेश्चन बैंक में. Then coming to what textbook to take, which author to refer, I think you might already have taken books. You need not be afraid if I am telling some other book. आप जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं just be consistent, whichever is suitable to you, that just stick with it, and just stay consistent. ये जो बुक्स है लाइक आई फील देम बेटर, लाइक आई फील जनरल सर्जरी के लिए एसआरवी ज्यादा बेहतर बुक है, बिकॉज इन मणिपाल इट्स गिविंग वेरी डिफ्यूज, इट्स हार्ड टू मेक अ आंसर टू राइट इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स. इन एसआरवी इट्स लाइक द डायरेक्ट यू कैन पॉइंटर्स वाइज है, आप लोग आराम से बना ले सकते हैं आंसर. Whereas for systemic surgery, Manipal is very good. Like he has given the proper conservative management, mnemonics, and in practical purpose के लिए भी Manipal में अब जो भी varicose veins है, hernia, जो भी अब लोगों को प्रैक्टिकल का लॉन्ग आंसर से इसमें अच्छे से दिया हुआ है कि इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, पाल्पेशन में, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये सारे फाइंडिंग्स है. जब भी अगर आप थियरी के लिए कोई आंसर पढ़ रहे हो जो कि प्रैक्टिकल के लिए लॉन्ग केस है, so you better do in the both as a theory aspect as well as practical aspect. और मणिपाल में ABCDEF ऐसे मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी है. आप लोग को सर जनरल अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो कंजर्वेटिव, डेफिनेटिव मैनेजमेंट में सब लिख ले सकते हैं. और ऑर्थोपेडिक्स के लिए तो बस एक ही बुक है, महेश्वरी. आप लोग अगर चाहे तो आप लोगों के कोई भी ऑनलाइन रिसोर्स की बुक्स नोट्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन महेश्वरी इज गुड बुक.
और जो है प्रैक्टिकल्स के लिए ऑब्वियसली एस्तास तो पक्का पढ़नी है आप लोगों को। आपके प्रैक्टिस जब भी आप लोग हॉस्पिटल के पोस्टिंग में जाते हैं, टेक योर एस्तास। इट इज स्टार्टिंग 50 to 100 पेजेस तो पढ़ना है। दैट अल्सर्स, व्हाट आर द काइंड ऑफ स्वेलिंग्स, उसमें टेस्ट कौन से हैं, बिकॉज इन द फाइनल प्रैक्टिकल्स शॉर्ट आंसर्स में अल्सर्स या स्वेलिंग्स, लाइपोमा, सेरेशियस, डर्मोसिस यूजुअली पूछते हैं, एंड दे आस्क यू हाउ डू यू डू दैट पर्टिकुलर टेस्ट। और जो भी इवन लॉन्ग आंसर्स भी अच्छे से, लाइक इन द फाइनल प्रैक्टिकल्स द सीन्स आर नॉट वेरी गुड, बिकॉज आप लोग को मालूम होगा कि हमारे बैच में लाइक ओनली 2 distinctions इन द इंटायर 2020 बैच। और हम लोग सोचे कि प्रैक्टिकल्स में मार्क्स के, नो, इट्स इन द थियरी बहुत ज्यादा लाइक उन लोग स्ट्रिक्ट करेक्शन कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल जो भी आप बोल रहे हैं वो मार्क्स दे रहे हैं। लाइक इफ यू आर गिविंग इट वेरी वेल, देन दे आर गिविंग यू वेरी गुड मार्क्स, एंड इफ यू डोंट, इफ यू आर आंसरिंग, they are not giving even mercy marks. तो आपको प्रैक्टिकल बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है। अटेंड योर कोचिंग रेगुलरली, डू योर केसेस, मालूम कर लो आपके कॉलेज में सीनियर से कौन से केसेस आते हैं। देन गो टू योर HODs, प्रोफेसर, एंड नो व्हाट आर द वाइवा क्वेश्चंस एंड ऑल। The resources that will help you, that will aid in your preparation, is obviously from Marrow, Rohan Kandelwal sir for surgery. He is the OG sir. आप लोग इवन जय अरोरा इक्वली गुड, आप लोग दोनों में से कौन सा भी प्रिफर कर सकते हैं। और जब भी आप लोग ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, यू कैन वॉच इट एट द 1x और 2x स्पीड। और जब भी आप लोग पढ़ रहे हैं, गिव अ एक्टिव लर्निंग, नॉट जस्ट अ पैसिव लर्निंग, कि आप आपके हार्ड कॉपी नोट से आप लोग अंडरलाइन कर ले रहे हो, और इफ यू जस्ट मेकिंग नोट्स, यू आर जस्ट स्क्रिबलिंग अवे, सो दैट कुछ तो आपके माइंड में फीड होते रह रहा है। एंड ऑब्वियसली फॉर ऑर्थो बस सर इज लाइक द बेस्ट फॉर द ऑर्थोपेडिक्स। आप लोग जितने जल्दी हो सके वीडियोस कवर कर लो, साथ के साथ फिर and can also follow. Even and this is there is a this app in the Play Store called Touch Surgery. It's a very interesting kind of app because now we all are phone kids. So जो भी है phone से ही पढ़ रहे हैं। जब भी अगर कुछ पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, something we want to do something interesting, it's that kind of app. Like इसमें तमाम जितने भी surgeries है, what not even in surgery, orthopedics, OBG, it has shown the pictorial, like you properly, he instruct you to do an incision or something like this is the surgery of appendectomy, then what is the position, where do you place the incision, what instruments we do, what is the next step। इससे क्या हो, आपके practical knowledge भी improve होता है, you know the instruments, you know the surgery, and और जो है anatomy भी helpful होता है, even for your writing for your answer it will also help there। It's a good app. It's a free app. You can download it from Play Store named Touch Surgery. And coming for practicals, the YouTube channel, The White Army. It's the OG platform. यहाँ पर like various other state के students जो है cases present करते हैं. Mostly the common cases जो भी हमारे पास भी वही होते हैं, hernia, varicose veins. They present it, you know. हाँ, यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं कि how do you present your cases, then what you can expect, what the viva questions can be asked, एग्जामिनेशन कैसे करना है, एंड ऑल्सो एडकॉम इमरजेंसी सर, देयर इज अनदर यूट्यूब चैनल। ये प्लीज आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल को नेग्लेक्ट मत कीजिए, ये बहुत अच्छा सा यूट्यूब चैनल है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। एंड देयर इज अ वेल नोन सेइंग कि अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। तो हम लोग को लाइक अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला लाइक यू हैव कम सो फार, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग मे बी, आप लोग फाइनल ईयर में आ गए, एंड 1 year and then you will be done with MBBS. You will be doctors, inshallah. शाम तक कुछ So, मालूम हुआ था। hello. So आप लोग एक साल में आपको हो जाता, then you just need to have a proper plan because you have 2 more additional subjects to do than the other final year past students, ENT and Ophthalmology. You have less time, and final year is just very easy. It's not हार्ड, बट इट्स वेरी लेंथी। आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना है, टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है, डेली बिल्कुल रोजाना पक्का पढ़ना ही पढ़ना है। और आप लोग को लाइक अल्हम्दुलिल्लाह से सोर्सेस मालूम, बुक्स है, लाइक सब कुछ पता है। जस्ट इफ यू डू नॉट प्लान इन अ प्रॉपर वे, इन द प्रॉपर टाइम, देन इट विल बी लाइक लास्ट मोमेंट में बहुत बहुत मुश्किल होती। सो प्लीज प्लान विथ अकॉर्डिंगली, अच्छे से फॉलो। इफ यू वांट लाइक प्लान, you can either go anterograde way or retrograde. Anterograde, I mean to say कि
अगर आप आज अभी कुछ आर्टिकल डिसीजेस का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो ओपन योर क्वेश्चन बैग, इधर में भी उस्मानिया, सिया और फिजिकल जो भी है, देख लो कि वो टॉपिक में से क्या इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, so that whenever you're watching the video lecture, you know where to focus more. Then after finishing the topic, open your textbook and script, make the notes. Notes ऐसे बनाओ कि ऐसे में मत बनाओ कि textbook और आपके notes में फर्क ही नहीं. Make it the way you want to present in the your finals. Take all with the pointers, flow charts, in that way. And after you are done with your notes, then you can solve the question bank, because surgery and orthopedic both itself is nearly 30 to 35 questions, as I said, will be expected in the NEET PG. तो आप लोगों को इवन आपके यूनिवर्सिटी एमसीक्यूज के लिए भी हेल्पफुल रहता है, इवन नीट पीजी के लिए भी हेल्पफुल रहता. और एल्स यू कैन गो इन द रेट्रोग्रेड वे, लाइक ऑलरेडी आप कोई आंसर पढ़ लिए टेक्स्ट बुक से, फिर देन यू कैन वॉच अ वीडियो लेक्चर, सो दैट आपको समझ में आता है कि आपको क्या पॉइंट नहीं समझ में आया. देन इट विल हेल्प यू इन आइदर वे, वॉट एवर सूट्स यू. Then make your own notes, like this is the my notes, like last year हम लोगों को shoulder dislocation पे ortho का long answer आया था, and this were my notes for this. मैं actually I was a note making person, तो मैं जब first internals में pre finals and for the finals I used to just revise this, and exam में मुझे कोई like ऐसे टाइम नहीं लगता था कि अरे मैं कैसे notes बनाऊं. It would be very fast, like you have written the mechanism, the intro. You need to start with long answer like introduction, what like it is most common joint to dislocate है, कौन सा type of dislocation ज्यादा है, then what is the mechanism, then what are the classification it has, और in the with simple आप लोग even पैराग्राफ में points भी लंबे लंबे लिखने की जरूरत नहीं है, just small points, what are like flow charts use करना है, then what are the clinical features, how do the patient present, then how do you diagnose. Just simple in the, like examiner को कम टाइम में पता लग जाना चाहिए कि you know the concept. Then it includes the classification, then the treatment, and what are the investigations you do. If you're doing X-ray, what are the view, AP view है, PA view है, lateral है, जो भी है, and the treatment भी like जो you have to write like what is the treatment of choice, what is the conservative treatment. अब थोड़े लोग जो है सर्जरी मना करते हैं, then what do you do, medical management. And then we have complications, or like what are the early complications क्या है, late complications क्या है. Just make you very presentable, and of course diagrams are must. Final year के lesson answers में दिखता है कि diagrams कम है, लेकिन at least some pictorial diagrams you need to draw, and just draw कर लो कुछ भी diagrams. और ये भी एक like मेरा सर्जरी का like renal cell carcinoma का आंसर था, like etiology है, but small points. What are the risk factors, what are the types of renal cell cancer, like ASL है, papillary है, chromophore है, then the clinical features. ऐसे like you need to add all the points जो भी 7 to 8 है. Even if you are asking only management, थोड़ा like add, just write few about etiology also, clinical features, and management includes investigation and treatment. Investigation में you need to mention every investigation. Simple जो भी है, अब लोगों को अगर कुछ आंसर भूल भी जा रहे हैं तो सिंपल इन्वेस्टिगेशन, सीबीपी है, ईएसआर, अगर कोई इन्फेक्शन है तो जनरल सोच लेना ठीक है, ईएसआर और सीआरपी तो रेस्ट रहता. अगर वो ऑर्थो के इन्वेस्टिगेशन सोचे तो ऑब्वियसली आइदर एक्सरे और सीटी. In surgery, it's all about MRI or USG or MRCP, ERCP. जनरल याद रखना. और सर्जरी में जो है स्कोरिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट नेग्लेक्ट द स्कोरिंग. स्कोर लाइक रैंसन्स क्राइटेरिया, एलोवार्डो स्कोर, और हम लोगों को लाइक टोक्यो स्कोरिंग आया था. तो जो भी ऐसा नेम्ड क्राइटेरिया वाले स्कोर्स है, just make sure you learn it proper way, because either you get a short answer or very short answer, or else maybe in the MCQs like कौन सा इंक्लूड नहीं होता ये स्कोर में, समथिंग दैट काइंड. Again, coming to practicals we like, okay, it's all about the radiographic pictures. You will be having OSCE sessions. OSCE में तो सारे pictures रहते हैं, then you can easily identify that. You will have radiographs आप जब भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी like look it in the Google image or in the textbook itself, what is the radiographic implements. जो भी surgery से look at the instruments, what it is used, attend OTs, learn the instrument,
and learn the cases, present it to your sir during practical sessions. Then it's that's all. It's a final. आराम से हो जाता आप लोग बस इतने सारे साल like already you have completed 3 years alhamdulillah and just one more step आप लोगों को अब से like maximum idea तो होगा कैसे पढ़ना है approach कैसे करना है subject को बस keep calm just keep revising finals at least pre-finals तक you need to give one good reading and a one revision because literally like पहले बोलते थे कि लास्ट एग्जाम पे लास्ट एग्जाम सिंड्रोम होता बट इन फाइनल ईयर लिटरली यू फील इट इन द डे वन बिकॉज इट्स सो एग्जॉस्टिंग इतना पढ़ना होता है कि टाइम भी नहीं होता है इतने सारे क्वेश्चंस करना है सो प्लीज बी परफेक्ट विद द आंसर्स डू नॉट कीप एनीथिंग न्यू फॉर बिफोर द एग्जाम्स अगर आप लोगों को अगर कुछ नहीं पढ़े तो यू कैन ऑब्वियसली अप्रोच द स्मार्ट एंड ऑल नोट्स just do not waste your time. At least अगर low days पे भी है तो at least read one answer or watch one video. Every single day is important. Every single subject is important. सभी subject को equal importance होना ऐसा नहीं कि just medicine और surgery पढ़ लिए. Just it. I think I am done. Thank you. कुछ भी डाउट से तो शायद लास्ट में Q&A में आप लोग पूछ सकते हैं. Jazakallah khair, Dr. Shabnam. That was incredibly helpful. You simplified so much and gave us a realistic roadmap. Your practical advice and clarity will sure help us approach surgery and ortho with a lot more confidence. May Allah bless you. Up next is Dr. Sayyida Fariha Tabassum, who will be guiding us through how to prepare for ENT exams, theory, viva, diagrams, and clinical case presentation. ENT often feels neglected until the last moment, so this session is a must to make it easy and high yield. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Jazakallah khair. Hope you all are fine. This is Sayada Fariya Tabassum from 2K20 batch, Shada Institute of Medical Science. So today's session is gonna to be a practical and relaxed conversation about how to approach this ENT subject effectively. So we will talk about the core textbook, some useful resources, and how to master exam presentation, inshallah. But before we begin, quickly show off me your hand. Okay, how many of you already feel the pressure of final years? Like you all have entered final years and it's almost 4 to 5 months. Yeah. Hopefully everyone would have the fear of final year and pressure. Yeah. So how many of you know exactly which textbooks to follow and which ones to just keep on the shelf? Amazing knowing. So perfect. So let's final year is tough, no doubt, but it's also the most exciting part of your MBBS, you know. You are now closer than ever to becoming a doctor in practice. Have you ever imagined? So don't let your fear cloud your vision. Get resources right and study smart and present like a pro. So let's make this session interactive going forward. So this year, the focus is not just on mugging up the topics, but also developing clinical and reasoning and concepts and writing and structured answers. So you are expected to know not just what happened, but why, and more importantly, what would you do as a doctor? So already Shabnam has given a clarity on surgery and orthopedics. So let's proceed with ENT. So ENT may sound like a narrow specialty, but it's incredibly relevant and practical. It covers everything from basic infective like tonsillitis, otitis media, to life-threatening emergencies like epiglottitis, या फिर airway obstruction, या फिर head and neck cancers, etc. But more importantly, as future general practitioners, you will be seeing ENT complaints almost every day, from like a child with blocked nose or elderly with hearing loss. So ENT, what are the key concepts in ENT? Anatomy, physiology, and pathology overview. Understanding the anatomy of the ear is crucial for diagnosis, and the physiology of nasal cavity plays a role in respiratory health.
Common pathologies in ENT include infections, allergies, and tumors. And effective examination techniques are essential for the accurate assessment. So let's move to the resources. So already I guess you already know about something about the resources. These resources are mainly for the one who are starting reading and not for last moment battlers. So Dhingra, I guess, most standard book and acceptable Indian textbook for ENT, and almost every student use Dhingra only. And after following that is Hazarika. It is a more organized with proper side heading, useful for university exams, but frequently not frequently used by students because it was not prioritized over Dhingra. So the theme is this book is gaining popularity recently. Few college faculty are recommending this book. So after following the textbooks, the main is video resources. So what video resources would you follow? So what I followed was Marrow, Manisha ma'am. I used to watch the videos of Manisha ma'am. You can use any platform which suits you. So first, what you have to do is पहले video देख लेना, watch video, and then साथ का साथ textbook कर लेना आप लोग, because if you watch all the videos one by one, then you will forget what I watched in that video. So आप लोग जब भी वीडियो देख रहे हैं, just watch any topic, like CSOM के बारे में देख रहे हैं, तो just watch CSOM topic and simultaneously to the textbook. जब का जब आप पढ़ लेंगे तो it will be easy for you to read that topic from the textbook, and you will realize कि क्या important points है, वीडियो में क्या important points पे ज्यादा focus करें, and textbook में क्या important points पे I have to highlight and present in the exam. तो साथ का साथ वीडियो रिसोर्स के साथ साथ टेक्स्ट बुक करना, बिकॉज डोंट डू दिस बिगेस्ट मिस्टेक कि आप पहले पूरे सब ईयर के वीडियोस देखते रहे, देन नोट्स एक साथ देख रहे, then while you are reading the textbook you don't know what you have watched in the video. So do the video simultaneously along with the textbook. So next will be know your syllabus. तो ईएनटी में ज्यादा वेटेज ईयर का रहता, मोस्टली ईयर में कॉन्सेप्ट भी ज्यादा है, एंड एनाटॉमी लाइक थोड़ा एनाटॉमी समझ लिए तो आप लोग को इजी हो जाता है. तो ईयर एंड नोज विल हैव हाई वेटेज, लाइक 1 LAQ और 2 SEQs या VSCQs आ सकते हैं. नोज में से भी 1 LAQ 1 SEQ और 2 VSCQ या फिर 2 SAQ आ सकते हैं, एंड फॉलोड बाय फेरिंग्स एंड लैरिंग्स. लैरिंग्स में थोड़ा एनाटॉमी समझने में प्रॉब्लम होती फर्स्ट टाइम, बट while you are reading and watching videos simultaneously, तो आपको लैरिंग्स की एनाटॉमी, फेरिंग्स की एनाटॉमी भी समझ में आ जाता है. तो इसमें भी से भी एक LAQs आ सकते हैं. सो यू नीड टू लर्न दैट, लाइक ईयर में से जैसा CSOM आ सकता है, ASOM आ सकता है, या फिर हियरिंग लॉस आ सकता है, ओटोस्क्लेरोसिस, मेनिंजाइटिस आ सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट आंसर आप लोग पहले LAQs अच्छे से कर लेना. देन नोज में पॉलीपोसिस या फिर DNS, एपिस्टैसिस या एटोपिक राइनाइटिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट LAQs है, यू नीड टू डू दैट. देन फेरिंग्स में से लाइक जनरल नेसोफैरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा, ये सब टॉपिक्स आ सकते हैं. लैरिंग्स में से ट्रेकियोस्टोमी या फिर लैरिंजियल कार्सिनोमा, ये सब आ जा सकते हैं. हाँ, राजेश धवन ENT इज ऑल्सो गुड. whichever suits you, you can follow that. If you read anatomy of ear, nose, larynx, pharynx, then it will be easy for you to study other things. So just go study smartly. Studying smart begins with knowing your syllabus thoroughly and prioritizing high yield, high weighted chapters first. This is the most effective and strategic approach. Then for next is what will be the weightage of ENT NEET PG. So around 8 to 10 questions NEET PG में ENT से रहेंगे. That will focus on hearing loss, vertigo, instrument, tumor, syndromes, and basic ENT anatomy के questions रहेंगे. And image based questions भी रहेंगे, like anatomy picture दे देते, identify this picture, या फिर label करके what is the label is about बोल के ऐसा कुछ picture दे दे, या फिर एक्सरे दे सकते, एंडोस्कोपी दे सकते. So अगर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें नीट पीजी का अभी से, आई वुड रिकमेंड के पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम के बाद में नीट पीजी का अलग से पढ़ लेंगे इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी गैप. तो नीट पीजी के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज कि मैं जब थर्ड ईयर में थी, आई यूज टू वॉच द मेन वीडियोस. ENT के जब भी लेक्चर देखना है, आई वुड वॉच मेन वीडियो,
simultaneously I will read the textbook. So मेन वीडियो वॉच करने से उन लोग कॉन्सेप्ट समझा देते कि ये है. देन टेक्स्ट बुक में से लाइक अब एलएक्यू का क्वेश्चन है तो आई विल सी दैट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक उसमें अंडरलाइन हाईलाइट करके आई विल मेक रेडी फॉर टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. प्रेजेंट जो जैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है आई वुड प्रिपेयर दैट इन द टेक्स्ट बुक हाईलाइट कर लेके. देन अब क्या है, अब लाइक आई हैव डन विद माय ईएनटी एग्जाम. अब इंटर्नशिप में क्या करी मैं, लाइक आई डिडंट वॉच ऑल द मेन वीडियोस अगेन, आई जस्ट वॉच द रिवीजन वीडियोस. तो अभी क्या करी मैं, while doing my ENT in the posting in the ENT department, I just watched the revision videos and it was really like कि मेरे को पूरे मेन वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट्स थे मेरे को वो पूरे रिकॉल हो रहे थे. लाइक मैं अमेज थी कि अच्छा हुआ मैं मेन वीडियोस जब कर ली थी, अभी मेरे को ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ा मेन वीडियोस में, जस्ट गोइंग थ्रू द रिवीजन वीडियोस. क्योंकि रिवीजन वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करते एंड मेन पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करते, तो वहाँ पे क्रिस्प एंड कंसाइज हो जाता टॉपिक. और आपको पूरा मेन वीडियोस का कंटेंट फिर से नहीं रहता, तो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं रहता. लेकिन अगर आप लोग मेन वीडियोस नहीं देख के डायरेक्टली रिवीजन वीडियोस में जा रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है आप लोग को. तो मेन वीडियोस अभी से कर लेके रखे तो आप लोग को इंटर्नशिप में सिर्फ रिवीजन वीडियोस कर लेके एंड रिवाइज नोट्स रिवाइज कर ले तो इट विल बी गुड फॉर यू. नाउ नेक्स्ट टू द क्लिनिकल्स एंड पोस्टिंग. सो आई वुड टेल यू के क्लिनिकल पोस्टिंग सीरियसली अटेंड कर लेना आप लोग. थरो हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन पार्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. unless and until you don't go to posting you won't realize what is otoscope कैसा दिखता, what is tongue depressor, how to hold tongue depressor, adoption of probe किसको बोलते हैं. आप पोस्टिंग ही नहीं देंगे तो how will you identify that? लाइक एक बेसिक एमबीबीएस डॉक्टर को जो मालूम है ना यू विल लर्न इन द पोस्टिंग ओनली. एंड यू कैन सी कैसा माइनर ओटी प्रोसीजर्स कैसे रहते हैं, डीएनई कैसा करते हैं, ऑटो एंडोस्कोपी कैसा करते हैं. आप जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि व्हाट इज डीएनई एंड व्हाट इज ऑटो एंडोस्कोपी. Until you won't examine the patient, you don't know how DNS, like deviated nasal septum कैसा दिखता, and you won't know कि bilateral inferior turbinate hypertrophy कैसा दिखता. So and at the same time do the same questions there and itself. Like अब जैसा CSOM का केस आया, CSOM का केस देख लिया आप लोग पोस्टिंग. Then at that the same time टेक्स्ट बुक खोलो, CSOM में क्या लिखे हुआ था उसके बारे में एंड पेशेंट किस कौन से कंप्लेन से प्रेजेंट हुआ. सेम जब का जब पढ़ लिया आप लोग, लाइक जैसा एलर्जिक राइनाइटिस का केस आया देख के यू विल सी द पेशेंट के कंप्लेंट किए थे एंड टेक्स्ट बुक में ये था, तो दोनों मैच हो रहे क्या. ऐसा पढ़ने से आप लोग को जब का जब अलग से ईएनटी को टाइम देने की भी जरूरत नहीं पड़ती एंड आप लोग जब का जब अच्छे से पढ़ ले सकते. क्लिनिकल से केस सिनेरियो बेस्ड रहते ना क्वेश्चंस तो आप लोग को अच्छा डायग्नोस करने आ जाता, प्रोविजनल डायग्नोसिस तक कंक्लूड कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप ऑलरेडी वो केस देखे थे एंड आप जो आंख से देखते हैं लाइक पेशेंट को देखते हैं यू वोंट फॉरगेट दैट. तो ओटीज भी अटेंड करिए, you will get to know कि in which position the patient is being operated या फिर and what are the instruments they are using and how endoscopically surgeries are done. और अगर सेप्टोप्लास्टी देख ले तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेप्टोप्लास्टी एंड एसएमआर. अब सेप्टोप्लास्टी देख ले तो आप जल्दी टेक्स्ट बुक में ओपन कर लेके देख सकते हैं कि सेप्टोप्लास्टी व्हाट इज सेप्टोप्लास्टी एंड व्हाट इज एसएमआर, व्हाई सेप्टोप्लास्टी इज प्रिफर्ड ओवर एसएमआर. वो जब का जब डिफरेंस देख ले तो आपका एक एलओसी हो जाता है. ये केसेस देख के आप लोग को जब तक जब याद हो जाता है आप लोग को लाइक अ विजुअल मेमोरी. एंड व्हेन यू रीड द टेक्स्ट बुक फॉर इट यू विल रियलाइज एंड रिकॉल के मैं जब ये केस देखी थी बोल के. So take it seriously. Every minute, every struggle, every effort counts, and with consistency, the rewards will be yours. So next, moving to the exam presentation tips for ENT. When you start an answer, you should include these points, like starting with definition. Every answer, like अब सिर्फ CSM के बारे में direct question दे दिए without describing anything. First, you have to start with definition. What is the definition of CSM? And textbook का proper definition लिखे तो it will be more scoring. And etiology लिखना, what are the risk factors in etiology, and describing short pathophysiology या pathogenesis छोटा like a diagram भी present करिए तो it will be good. Then main will be clinical features and management part. Clinical features में signs will be different and symptoms will be different. तो साइंस सिम्टम्स अलग अलग साइड एडिंग्स के साथ आप लिख दे सकते हैं. एंड मैनेजमेंट विल कम, लाइक मैनेजमेंट में इट इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट.
इन्वेस्टिगेशन में आप जो भी डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो दैट विल इंक्लूड इन द मैनेजमेंट पार्ट। एंड ट्रीटमेंट में भी दो टाइप के रहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो ये सब साइड हेडिंग्स में और बुलेट पॉइंट्स में आप लोग को एग्जाम प्रेजेंटेशन में ईएनटी एग्जाम में रखना है, इंक्लूडिंग डायग्राम्स वेयर पॉसिबल, लाइक एनाटॉमी ड्रॉ करना है तो ईयर की एनाटॉमी ड्रॉ करना है तो simply draw the anatomy of the ear, then underline the key terms, जैसा कि एएसओएम में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रहा तो वो अंडरलाइन कर लेना। अब एएसओएम में थ्योरीज रहते हैं, तो फेजेस रहते हैं, स्टेजेस रहते हैं, ट्यूबल ऑक्लूजन, प्री सुपरेटिव, सुपरेटिव, तो वो अगर आप अंडरलाइन करते हुए लिखेंगे एंड उसको हाईलाइट करेंगे तो इट विल फेच यू मोर मार्क्स। एंड डिफरेंट कलर से यूज करें तो इट विल लुक लाइक अच्छा कलरफुल दिख रहा है एग्जामिनर को करेक्ट करने। एंड टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप सिर्फ एक एलडीक्यू लेके उसको कलरफुल एंड सब अच्छा कर लेते बैठे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 14 to 15 मार्क्स दे सकते हो, ज्यादा उससे ज्यादा तो नहीं दे सकते। सो लाइक एलडीक्यूज को इतना एक स्पेसिफिक टाइम रख देना, इतने टाइम में मेरे को करना है बोल के जितना हो सकते अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करना, बिकॉज प्रेजेंटेशन कैन अर्न यू 5 to 10 मार्क्स एक्स्ट्रा। सो बी कीन अबाउट द प्रेजेंटेशन। सो नेक्स्ट, how to read textbooks. Many of you face problem in reading textbook and directly exam notes पे चल जाते सब जने, but reading textbook is must for everyone, क्योंकि अभी एमबीबीएस में आप लोग टेक्स्ट बुक रीड कर सकते हैं, बाद में आपको नीट पीजी के लिए फिर से टेक्स्ट बुक ओपन करने का टाइम नहीं रहेगा। तो टेक्स्ट बुक रीड करने का मतलब ये है कि पूरी टेक्स्ट बुक याद नहीं करना है आपको, एक बार फर्स्ट रीडिंग में आप रीड करिए समझ के तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मालूम हो जाते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन सेकेंड रीड में आपको हाईलाइट कर देना है, लाइक यहाँ पे है जैसा है कि स्पेसिफिक पॉइंट्स आप हाईलाइट करिए, देन नेक्स्ट रिवीजन में सिर्फ वो स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको देखना रहेगा। अब एक कोलेस्टेटोमा का आंसर है, उसमें से स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या है वो हाईलाइट कर देना। देन मेरे को ये डायग्राम ड्रॉ करना है बोल आई विल मार्क टिक मार्क ऑन दिस डायग्राम, एंड ये सीरीज के डायग्राम से मेरे को टिक करना है, एग्जाम में प्रेजेंट करना है बोल के आई विल टिक ऑल दिस डायग्राम। देन रिवाइज करते वक्त मेरे को मालूम है कि at what diagrams I have to more focus on and at what points I have to more focus on। अब जैसा एएसओएम है तो इसमें जैसा थियरीज का बोली थी, स्टेजेस का बोली थी, स्टेज के बारे में लिख दिए, रूट्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में जस्ट या स्टेशन ट्यूब या फिर एक्सटर्नल ईयर, जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टिक कर लेके हाईलाइट कर लेके रख लेना है आपको टेक्स्ट बुक में। देन रिवाइज करते वक्त आपको इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। एंड फ्लो चार्ट मैनेजमेंट में फ्लो चार्ट रहेंगे, दैट विल फेच यू मोर मार्क्स एंड टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं रहता, फ्लो चार्ट जल्दी जल्दी आप लोग ड्रॉ कर सके। देन अगर कोई आंसर आपको प्रेजेंट से नहीं करने आ रहा, लाइक टेक्स्ट बुक से पढ़े तो भी आपको याद नहीं रहेगा, तो यू कैन मेक नोट्स ऑफ फ्यू एलक्यूज, लाइक थोड़ा मोनोटोनस रहता टेक्स्ट बुक में कि डायग्राम्स नहीं रहते या फिर पूरा यूनिफॉर्म रहता आंसर, पॉइंट वाइज नहीं रहता, तो जस्ट टेक्स्ट बुक में से सेम क्वेश्चन पॉइंट कॉपी कर लेके आप प्रेजेंटेबल वे में आप एक नोट बना लीजिए। लाइक यहाँ पे मैं जैसा थोड़े आंसर्स के लिए मैं खुद नोट्स बना ली थी पेरिस्टॉन्टिलर एक्सेस से। सो फर्स्ट व्हाट विल बी डेफिनेशन, उसकी पोजीशन क्या है एक्सेस की, देन इटियोलॉजी क्या है, जस्ट द पॉइंट, देन उसका डायग्राम क्या रह सकता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या रह सकते हैं, साइन सिम्टम्स क्या रह सकते हैं, एंड देन द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट पार्ट। एंड ट्रीटमेंट पार्ट में भी लाइक एक पहले हॉस्पिटलाइजेशन देना, देन आईवी फ्लूइड देना, एक बेसिक जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रहती है ट्रीटमेंट पार्ट में वो वाला आप लोग फॉलो करना। एंड अगर ट्रीटमेंट पार्ट में भी कुछ डायग्राम्स एंड ऑल है तो यू कैन मेक दैट डायग्राम्स एंड ऑल। तो नोट्स बनाने के लिए आप हाँ नोट्स विद डायग्राम्स, हाँ एवरी नोट्स हैव शुड हैव डायग्राम्स, लाइक आप लोग को ओपन करें तो भी आप लोग को पढ़ने के लिए भी थोड़ा इंटरेस्ट आना ना, तो वो सीइंग ऑल दोस डायग्राम्स आपको अच्छा दिखता है, अरे वाओ क्या डायग्राम्स है, लाइक प्रैक्टिस। अच्छा परफेक्टली आर्टिस्टिक डायग्राम्स रहना जरूरी नहीं है, यू कैन रफली ड्रॉ लाइन डायग्राम्स भी रहा तो बस है, यू कैन प्रैक्टिस दैट। Next, how to manage ENT with other subjects of final year. This is the most important question. Because some of you already have done with ENT and ophthalm in third year, जिसके पास internals हो गए, but few of you didn't even touch the ENT or ophthalm in third year. सिर्फ HPM forensic पढ़े थे. So those who did ENT ophthalm in third year and internals degree or no, you can, and if you have confidence on yourself and like आप पढ़े तो याद रह सकता आपको, तो you can open that those questions
बिफोर द प्री फाइनल। लेकिन अगर आप लोग ईएनटी टच भी नहीं करे थर्ड ईयर में एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट ईएनटी, सो आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं कि वेन एवर यू वॉन्ट यू आर लर्निंग सर्जरी पार्ट, लाइक सर्जरी पढ़े, ऑर्थोपेडिक्स पढ़े, देन यू विल बी लाइक अरे बहुत हो गया तो लेकिन आपको पढ़ना है, लेकिन सर्जरी और ज्यादा नहीं कर सकती मैं, तो जब ईएनटी ओपन कर लेना, लाइक अगर आप पूरा वीक ऐसे सर्जरी पढ़े तो वीकेंड पे संडे के दिन थोड़ा टाइम निकाल के ईएनटी शुरू कर देना, या नेक्स्ट संडे आप ओबीजी कर रहे हैं तो साथ में एक छोटा सब्जेक्ट, तो इससे ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर लेना टाइम थोड़ा, बड़े सब्जेक्ट के साथ एक शॉर्ट सब्जेक्ट ऐसा भी करना है मेरे को वैसे, क्योंकि ईएनटी ऑप्शनल कर ले सकते हैं, शॉर्ट सब्जेक्ट है ऐसा नहीं है, दे आर इवन टाइम कंज्यूमिंग एंड इवन कॉन्सेप्ट भी बहुत है इसमें, आप विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ रेटिफाई कर लिए पूरे आंसर का आप लोग भूल जाते, सो बेसिक ऐसा फॉलो कर सकते हैं कि लार्ज सब्जेक्ट के साथ एक शॉर्ट सब्जेक्ट, एक लाइक एक शॉर्ट सब्जेक्ट बना ले सकते। सो लेट्स coming to the end, you are capable of more than you know. Believe in yourself. Believing in yourself doesn't mean you won't fail. It means you will keep going even when it's hard. It's about showing up for yourself every day, even when no one is watching you. And it comes from trying, failing, learning, and trying again. So, Jazakallah khair everyone. All the very best for your final exam. Jazakallah khair, Dr. Fariha. That was super practical and well structured. You made us realize how scoring ENT can be with the right strategy. Inshallah, your guidance will help us face this subject with a fresh mindset. Last but not least, we have Dr. Amtul Subur Siddiqui, who will share how to tackle opthal, from understanding anatomy and pathology to handling instruments, spotting questions, and navigating clinical postings. Opthal is short but very scoring. If you know how to study it smartly, Dr. Subur here is here to show you that exactly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Am I visible? Yes, ma'am, you are visible. I am Dr. Amtul Subur Siddiqui from 2K20 batch of Shadan Institute of Medical Sciences. And today I'm here to share some practical tips to help you crack your ophthalmology university exams, both theory and practicals, with confidence and smart planning. So, first things first, you might already know what ophthal deals with, right? It is the study of eye and its related diseases. While the subject may seem small, actually it's quite dense. Like, how many of your seniors frightened you guys regarding opthal? Hands up on in your chat, right? Everyone says opthal is dry subject. It is difficult to memorize. Although it is very difficult and dry subject, you can score good if you learn it in a smart way. The key here is to stay organized. So first of all, use right books. By now, you guys already have done it in third year. Like you already know a bit about Opthal if you have done it in third year. So I'll just brief you about the resources. For theory, A.K. Khurana is the best for concept building. Content अच्छा है, but it look vast. It is in statement format. So make notes from A.K. Khurana. It is must. On other hand, there is Renu Jogi. It is great book for last minute revision. It has good amount of flowcharts and tables. I suggest you to buy AK Khurana and keep a PDF file of Renu Jogi. Like while reading, make notes in point wise from AK Khurana. Open the PDF of Renu Jogi and simultaneously add flowcharts and tables from it in your notes. At the end, it will be really helpful for you. Then moving on to practicals, we have AK Khurana. It comes with its own practical manual. It is quite actually good. It has good amount of questions, one-liner questions after each case. It will be helpful during your practical exams.
Another one is Dadapir, which is the best book out there for practicals. It is concise and student friendly, and most of the examiners expect you to answer from this book. Then moving on to video resources, we have Dr. Utsav Bansal from Marrow, Dr. Ruchi Rai from Prep Ladder, and Dr. Rajaratna. Like when preparing for your university exam, you must know what are the important topics, right? Topics that will fetch you good marks, like conjunctiva, cornea. Then we have cataract, which is from lens, glaucoma. We have angle closure glaucoma, open angle glaucoma, retina. These topics we have direct LAQs from this. They have like almost 10 to 15 to 20 marks of weightage. Like you see here, we can see that we have long questions from major topics like conjunctiva, cornea, we have bacterial keratitis, corneal ulcer, we have cataract, congenital cataract, senile cataract, angle closure glaucoma, open angle glaucoma from glaucoma topic. It will fetch you 20 marks. Then we have lens, we have cataract, then we have diabetic retinopathy, and many such LAQs which we will get. Like it is must. The examiner will give you this LAQs. So if you focus on these topics, it will be very easy for you at the end. Then like these topics have highest weightage. This might look tough nut to crack, but once your concepts are clear, you can score good. The time you invest in this topic will benefit you. You see, there is this topic of squint, which is really difficult to understand. Like this, the concept for this topic is very difficult. So many of us just waste our time clearing concept of this topic, but actually you get only one question from this topic in university exam. So don't waste your time on topics like this. Utilize it, learn glaucoma, other like cataract, and any other topic which has LAQ. It will give you one LAQ, one SAQ, either or VSAQ. Like it is guaranteed. Then for preparing, check all the PYQs from the question bank, mark them in your textbook, then start preparing for your university exams. Now, going on to the preparation strategies, follow the right order. For LAQs, watch a video from any platform like be it Marrow, Prep Ladder, or watch any video from YouTube. Just get your concept clear. Then take your textbook, start making notes, and also while watching the videos, like I used to keep my textbook with me and highlight all the important points, what the ma'am used to explain in the video, so that when going for textbook reading, you won't have to read it word to word in paragraphs. You will have a concise version of it, and you can note it point wise in your notes and make structured notes. Okay, then whenever you're preparing your notes, make it using flowcharts. Include flowcharts and tables and diagrams. For me personally, I can remember flowcharts very easily compared to the paragraphs or the points. So I used to convert most of the answers in flowchart format and learn them. So you can also find your strength and use it to the max. Like be it flowchart, tables, or diagram. So use the smart way, not the hard way. See, be it classification, etiology, or management, you can convert the paragraphs from the textbook into the flowcharts and table and learn them easily. Then, going on, let me brief you on how to write the answer in ophthalmology. So, you see, first of all, use proper heading. Write bullet points, draw clean and neat diagrams. Like it should be labeled. Keep your answers structured and easy to follow. When examiner sees your paper, just by seeing proper headings written in the point wise, he will get the idea that you already know this topic. You have your concepts clear. So follow the pattern. For example, whenever you get a question from Ofthal, write it in the following heading wise. Like first write the definition of it, then going with the etiology. If there is any causative organism, mention it. Write the predisposing factors. What are the predisposing factors? Social, environmental, age, sex related uh, uh, predisposing factors. Then write the source, what is the mode of infection. And for some topics, we have WHO classification, staging, mention it. It is must. Then going with the clinical features, you have to write it point wise, the symptoms, what are the signs. Then going with the management.
we have investigation, diagnosis. While writing this management, we have medical, surgical management. Use a flowchart, convert it into flowchart management topic, then write. We have medical management. In medical, we give local medication, systemic medication. In surgery, like we have conventional, advanced surgeries. For example, see cataract. We have conventional surgeries, ICC, ECC. Then we have advanced phaco. So mention those in flowchart way. Okay. Then going on, for some questions, writing the whole surgery is important. Like we have to draw diagrams. The drawing diagrams is must. So then, like for while preparing for theory, at least LAQs ke notes banana is must. Check all the PYQs. For some volatile topics, revise them using marrow modules. Do active recall. Even NEET PG mein you will get 7 to 11 questions out of 200 questions from ophthalmology. Like how many of you guys get this question, like कि खुराना से कैसा पढ़ना, इतना ज़्यादा है, time is less, how should we make notes from Khurana? So try to make notes in concise manner from Khurana. Like let me show you one example. Here you can see while writing a question, this is the example of diabetic retinopathy. So first of all, write the definition. For etiology, risk factors, you go on with the point-wise manner. Then going with the pathology, writing the side headings. If there is any classification, write it in the flowchart manner so that it will be concise and look good. Then we have the features. So like, and draw some diagram, colorful diagrams. These are must. Then you see the management part. Write it in the flowchart manner. Like put arrow marks going on so that it will look good and structured. Then like you see in Khurana we have 5 to 6 pages of diabetic retinopathy. वो भी we have big paragraphs. So like while making notes, as I said before, use the smart way. Use flowchart formats, bullet points में बनाना. Then you see diagrams like this in Khurana. You see the diagrams on the left side. You can see these diagrams. You have to draw them in university exam compulsorily. So take the line diagrams from internet and then practice. You can see one diagram of diabetic retinopathy on the right side. It is a line diagram. So, and it is very easy for you to draw in exam using colors. You can mention the label them, mention hemorrhages, cotton wool spots using color pencils. Then it will fetch you good marks. Like these diagrams will fetch you extra 2 to 3 marks. Moving on to practicals. In ophthalmology, history taking part is different from other clinical subjects. Like you have to write the ocular examination in detail. Clinical postings are must. You guys must have already done with your postings. Some of you might have already done with in your third year, or even if your postings is pending, go and attend. Like focus on the case presentation, how to take history, how to do ocular examination. You must know all the most common ocular symptoms and their causes. You guys can't just write nausea, vomiting, headache, है ना? So ophthalmology is different from other clinical subjects. So go through these topics, go through the practical case presentation point before like writing before going for your practical exams. So check your practical manual once, see and learn the basic procedures, go to the posting and learn how you do the basic procedures. Examiner usually asks you to do and show some procedures, how to check the visual acuity, how you do ray diversion, pupillary corneal reflexes. Examiner bolte karke dikhao, show, do and show how you do the digital tonometry, how to check. Like most of you might have already done your posting. Even if not, then go and see these procedures. You should practice these skills in your postings. We have dark room procedures, retinoscopy कैसा रहता, how to check the iris shadow. ये posting गए तो textbook पढ़ना will become easy. And once I read that, your eyes see what your mind knows. So go and see your posting. Try to attend them regularly. Don't try to keep the practical part for the end.
लास्ट में थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल के देख लेंगे हो जाता. Don't think that. At least try to know what is there in opthal practicals. Even if your postings are done, watch few videos from YouTube or somewhere, some other platform. Don't waste your time. Then let me end you with some final tips. Plan your schedule. Just like Dr. Fariha said, Ophthal ENT might seem small subjects, but actually it is very dry. Ophthal is very dry subject. Like you should plan a structured schedule. Just as Dr. Fariha said, add Ophthal or ENT with a long major subject. If you are doing surgery or medicine, do Ophthal along with it. Like give 1/3 of your time of the day to Ophthal also. Don't neglect it. Like another thing is make one page summary notebook for every question. Like for any big topics, example trachoma is there, cataract, glaucoma. Make a one page summary notebook for quick revision. At the end, you will have a book with all the main topics just in one page, so that it will become a smart and a structured way for you to revise. And Ophthal, it is dry subject, as you all know. So at least one revision is must for it. Like you should complete it before 10 to 15 days of your final exam. Like you can do it. ऐसा नहीं कि you should like छोड़ देंगे end में देखेंगे Ophthal. Even if you have completed reading it in your third year, even if you have done something like from Ophthal in your internals, do one revision. One revision is must. And you should practice case presentations at least once. Don't keep it for last minute. So study well, attend the postings, stay calm, and wishing you all the best. Thank you so much. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Dr. Subur. That was extremely helpful and encouraging. You have made us realize that with the right focus, we can actually master the subject well before exams. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you for sharing your wisdom. Now, over to you all. It's time for our question and answer session. You have heard three experienced doctors break down how to tackle some of the trickiest clinical subjects. Got doubts, questions, confusion? Don't hold back. Drop them in the chat and we'll open the floor to live questions. Let's make the most of this moment. Ask away. You can unmute yourself and you can ask us. Medicine, OBG and pediatrics will be taken tomorrow. I guess this session won't be easy to conduct for long time. So we divided in two sessions. So medicine, pediatrics, and OBG will be we are going to do tomorrow. There's a question, ma'am. I'm very bad at making notes. I take a lot of time for that. Now I'm trying to rely on Marrow notes and Smart notes combined. Will it work for just passing? I would like to answer this question, Amrika. So हाँ ये एक नोट्स बनाना भी एक स्किल्स है आई गेस. सो अगर आपको नोट्स बनाने नहीं आता तो यू कैन यूज रेडीमेड नोट्स एंड इवन मैरो नोट्स आर वेरी इफेक्टिव एंड यू एंड इट्स वेरी यूजफुल.
but for specifically for different subjects you can't use narrow notes like जैसा ऑफ्थल है ऑफ्थल में मैरो नोट्स आर कंसाइज एंड क्रिस्प एंड कंसाइज सो अगर आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है तो इट विल बी ओनली सफिशिएंट टू पास द एग्जाम but not sufficient to score more. To score more, you need to add few points of the textbook or from any other notes. You can use smart notes combined with narrow notes. You can use that notes. It will work for you to just pass the exam. Ma'am, there's another question for surgery. For surgery, there are different names of surgery, ma'am. How can we remember all of them? For reading LAQ, it is taking long time. How will we be able to cover it in finals in one day? Dr. Shabnam, would you like to answer? Yeah. Sorry, my internet just got disconnected. What was the question? Ma'am, it's there are different names for names of surgery, ma'am. How can we remember all of them? For reading LAQ, it is taking long time. Will we able to cover it in finals in one day? Yeah, of course, it's actually a problem. But the thing is, if you do LAQ, no, then आपका SAQ और VSQ सभी चीज कवर हो जाती है बिकॉज LAQs कभी वो लोग शॉर्ट में भी पूछ ले सकते हैं वेरी शॉर्ट में भी पूछ ले सकते हैं और when it comes to remembering all the names of surgery then yeah of course मतलब as such उतने ज्यादा नहीं है इफ यू आर लाइक स्पेशल नेम्स तो आपको स्कोरिंग के लिए याद रखने ही है अगर कुछ भी अगर स्पेशल पॉइंट्स है जैसे कुछ भी लाइक मर्फी साइन या स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस ऐसे कुछ स्पेशल वाले जो रहते वो लोग अगर आप याद रख सक रहे हैं तो इट विल बी रियली हेल्पफुल टू स्कोर बेटर मार्क्स अगर नहीं भी तो यू कैन जस्ट राइट नॉर्मली मतलब जो भी आपको समझ में आ रहा है नहीं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको नेम सर्जरी लाइक पक्का याद ही करना है लाइक थोड़े से क्वेश्चंस लाइक जो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वैसे वाले आप लोग को तो याद करना है बाकी आप एक दिन पहले तो हो जाता अगर आप एटलीस्ट लॉन्ग्स तो करना क्योंकि लॉन्ग्स के लिए तो आपका शॉर्ट्स और वेरी शॉर्ट्स कवर हो जाते हैं मोस्टली I would like to add more on this कि सर्जरी में अगर मैनेजमेंट जब पूछे आपको तो आपको मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों भी लिखना रहता है सर्जिकल मैनेजमेंट में आपको पूरे सर्जरी इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस दे विल आस्क टू डिस्क्राइब द कंप्लीट सर्जरी मतलब पूरा प्रोसेस ऑफ सर्जरी डिस्क्राइब करो बोलते हैं लेकिन बट इन फ्यू क्वेश्चंस दे वोंट आस्क यू टू डिस्क्राइब द कंप्लीट सर्जरी तो वहां पे सिर्फ आप जब नेम्स मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि शी नोज अबाउट ऑल द डिफरेंट सर्जरीज बोल के तो इसलिए अगर आपको स्कोर करना है तो नेम्ड सर्जरीज को थोड़ा और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रीड में सब याद हो जाता सीइंग इट मोर फ्रीक्वेंटली आपको समझ में आ जाता अब समझो कोई सर्जरी है कोलिसिस्टाइटिस के कितने की सिस्टेक्टमी के कितने की सर्जरीज है तो वो आप अपने फ्रेंड को समझा रहे एक्सप्लेन कर रहे रीड करने के बाद तो ये सर्जरीज को ब्रेक वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके याद कर रहे या फिर आपके फ्रेंड को समझा रहे तो आपको जल्दी जल्दी याद होता था और ज्यादा टाइम के लिए भी आप रिमेम्बर कर सकते हो This was an earlier question, ma'am. How is Rajamahendra long and short cases for surgery practical? फॉर सर्जरी प्रैक्टिकल्स Yes, प्रैक्टिकल्स ma'am. के लिए प्रैक्टिकल्स के लिए देखो बस इस क्लास और यूट्यूब के वीडियोस आप लोग देख लिए तो इट्स मोर देन इनफ आप लोग मल्टीपल सोर्सेज के पास मत जाइए बिकॉज यू डोंट हैव ओनली वन सब्जेक्ट टू रीड देयर आर मेनी मोर तो वो मतलब अगर आप रिसोर्स ये रिसोर्स वो रिसोर्स पे जाएंगे तो फिर मुश्किल होंगी बिकॉज एस दिस इज ओजी बुक बिकॉज ऑल द एग्जामिनर्स द एक्सटर्नल्स और अपने इंटरनल्स भी मतलब इस दास पक्का उससे ही क्वेश्चन पूछते हो अगर आप जो भी आंसर बोल रहे हैं इस दास का आंसर रहा तो सेटिस्फाइड होते जो भी एक्सटर्नल्स हैं और आप लोग इस दास में अगर समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब
का वीडियोस देख लो, जैसे कि मैं बोली व्हाइट आर्मी है और 8 कॉम इमरजेंसी, इसमें आपको मेडिसिन और सर्जरी दो भी कवर, इवन ओबीजी भी कवर होता है आपको प्रैक्टिकल्स के लिए। और आप लोग इवन कॉलेज में भी आपके सीनियर से आपके प्रैक्टिकल्स के जब पोस्टिंग अटेंड करे तो बस खत्म हो जाता, आपको अलग से बुक फिर मल्टीपल बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइक आई फील। Next question. Is it possible to revise all the subjects in last 2 months before exam? How many months before exam should we complete our first reading in all? You can. Doctor? The main thing for final year is revision is must. अगर आप 2 months पहले start करेंगे पढ़ना तो आप revise कब करते, because final year is very vast. आपको 2 months तो बचने होते, 3 months minimum 3 months is required to do revision. अगर आप अभी से स्टार्ट कर दिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए, अभी से स्टार्ट कर दिए, लाइक जस्ट वॉचिंग मैरो, लाइक एनी मैरो वीडियोस या फिर कोई और रिसोर्सेज के वीडियोस जो भी देख रहे हैं आप, एंड टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं, तो आप अभी सिर्फ फर्स्ट रीडिंग दे रहे हैं, एंड उसमें आप फर्स्ट रीडिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो सब हाईलाइट करके रखेंगे। देन बिफोर द 3 months बिफोर फाइनल एग्जाम्स, जब आप फिर से वो टॉपिक को देखेंगे तो इट विल लुक समवॉट न्यू, लेकिन आप फिर से थोड़ी हिम्मत करके पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको आइडिया रहता है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट था इसका बोल। देन वो रिवाइज करने के लिए आपको मिनिमम 2 to 3 months तो लगते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी ये टाइम वो कॉन्सेप्ट समझ के रखे हुए है तो जब इजीली कर ले सकते। अगर पूरा न्यू टॉपिक आप जब भी करेंगे बोले तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता। तो प्लान अहेड, अभी से प्लानिंग करिए, एटलीस्ट एलक्यूज के टॉपिक्स कवर करके रख लीजिए। आप सब जो एक चैप्टर है कोई, लाइक अब सर्जरी में एक जनरल सर्जरी का कुछ चैप्टर है, शॉक में के एलक्यूज एटलीस्ट कर लेके रखिए आप। एसक्यूज बीएसक्यूज पूरा कवर करे तक आपको टाइम नहीं रहता, तो एटलीस्ट एलक्यूज वो चैप्टर के करके रखिए। देन जब 2 months 3 months जब रहेंगे, जब एलक्यूज को कम टाइम लगेगा, जब रिवाइज करके एसक्यूज बीएसक्यूज को थोड़ा रीडिंग दे सकते हैं जब, तो ऐसा प्लानिंग कर लेके आप यू कैन गो है। Next question, ma'am. Is in third year preparing for UPG or USMLE along with FMT and SPM, shall we still take time for ENT or Ophthal? Like, is it important because we just started attending class? हाँ, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएलई उसके लिए, क्योंकि ईएनटी आफ्टर 1 to 2 months में अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ लिए तो हो जाता है इंशाल्लाह। एंड एफएमटी भी 1 month में हो जाता है, एंड एसपीएम लाइक 2-3 months में हो जाता है। देन यू कैन कंटिन्यू फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएलई। एंड पीजी के लिए पढ़ना चाह रहे तो आप तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे तो आराम से पढ़ ले सकते हैं। ईएनटी पीजी के लिए पढ़ रहे तो वॉच जो भी सब्सक्रिप्शन लिया आप, वॉच दोस वीडियोस इन पीजी ओरिएंटेड वे, क्योंकि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड वे, यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड वे में स्पेसिफिक टॉपिक्स देख रहे तो इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू टू अंडरस्टैंड अदर कॉन्सेप्ट्स। अगर नीट पीजी के लिए प्लानिंग कर रहे तो यू कैन वॉच मेन वीडियोस विद कॉन्सेप्ट्स। तो पीजी के लिए तो इट विल बी गुड वॉचिंग, लेकिन यूएसएमएलई के लिए थोड़ा रिसोर्सेस लाइक फर्स्ट एड ये देखना पड़ता। एंड स्टेप 1 लेना चाह रहे तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट पर फोकस करता, तो यू कैन डू इन थर्ड ईयर इजीली। Next question, ma'am. The question is write the management of any disease. Then do we have to write the procedure of surgery in exam or just writing the name of surgeries are enough, at least in brief? Yeah, as we know that management is both investigation और treatment part है। Investigations में मतलब आप, मैं वही बोली कि आप लोग को आंसर जैसे जितना चाहे उतना लॉन्ग करना है, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी पॉइंट्स आप ऐड कर लिए, बिकॉज थोड़े एग्जामिनर को लाइक
आप लोग अगर 5-6 पॉइंट्स भी लिख दिया, उन लोग को जो आंसर चाहिए वो मिल गया, तो देन यू विल एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. तो इन्वेस्टिगेशन लाइक अगर कोई लाइक MRCP है, व्हाट आर द फाइंडिंग, लाइक डबल डिओडिनम, लाइक डबल रिंग अपीयरेंस है या सिंगल रिंग है, या मेकल्स डाइवर्टिकुलम में जो है सॉरी सिग्माइड वॉल्वल्स में कॉफी बीन साइन, ऐसे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो इन्वेस्टिगेशंस में लाइक फ्लो चार्ट में अच्छे से लिख दो. व्हेन कमिंग टू नेम सर्जरी, देयर आर मेनी सर्जरीज. आप लोग बाकी के अगर दे आर आस्किंग फॉर LQ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और ट्रीटमेंट ऑफ जो चॉइस जो रहता मेन सर्जरी, उसका लाइक ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दे दो. और बाकी के जो एक्स्ट्रा सर्जरीज है, जस्ट राइट नेम्स और जो भी मतलब उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो भी है ओवर अदर सर्जरी. अगर लाइक अब ब्रेस्ट सर्जरीज है, then modified radical mastectomy, you need to write why is it modified radical mastectomy, how is it different from simple mastectomy, radical mastectomy. तो ऐसे you need, ऐसे specific surgeries में you need to know the entire surgery of course. और इसका एडवांटेजेस ओवर नॉर्मल सिंपल mastectomy क्या है वो लिखना है. तो आप लोग को पूरा याद करने की जरूरत नहीं है. जो भी नेम्ड सर्जरीज मतलब जो भी सर्जरीज है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच सर्जरी, वो वैसे याद रख लो. नेम लिखो, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखो, और जो भी मेन सर्जरी या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है उसको और थोड़े 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा ब्रीफ में लाइक you can explain the procedure. You need not write everything from the incision to the end of surgery. The chat box is still open. If anyone wants to ask any more questions, please. Alhamdulillah, with that, we come to the end of another fruitful session. A heartfelt thank you to our vulnerable speakers, Dr. Shabnam Mehraj, Dr. Sayyida Fariha Tabassum, and Dr. Amtul Subur Siddiqui for their valuable time, clarity, and practical guidance. To all the students, may Allah make your journey easy, grant you success in your exams, and bless you with knowledge that benefits you and the Ummah. Tomorrow's session will cover medicine, OBGYN, and pediatrics. Please set your alarms for 9 p.m. Jazakumullahu khair for your attention. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Hadiba, for hosting this session. So let's end this meet with dua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.